नारादादियोगिवृन्दवन्दितं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे देवराज सेव्यमान पावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे देवराज सेव्यमान पावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दु देवराज सेव्यमान पावना देवराज सेव्यमान पावना देवराज सेव्यमान पावना देवराज सेव्यमान पावना जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं जलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका मद्दमद्दमद्दमन्निनादमद्दमर्वय चकार चन्दताण्डवं तनोतु न शिव शिव जतागताः सम्भ्रमा भ्रमन्निलिम्बनिर्जलि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपद्मपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीशनम् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय
Mahadev Dev, Mahadev Dev, Mahadev Dev, Mahadev. 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 Mahadev Dev, Mahadev Dev, Mahadev Dev, पूजा भसन गीतं या शम्भो पूजन परं व्रजति प्रदोषे तस्य स्थिरं रक्तगजेन्द्र तुरागयुक्तम्। He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra. असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमय सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं ब्रह्मास्मि। Good evening everyone and welcome to this Q&A session 106. So a pretty good things is one, some of the people celebrated Holi today and all the other celebrating the English Shakti Devi today, it seems. Happy Women's Day.
So we also take the privilege to wish that to each and everyone out there. लेकिन हमारे लिए तो वुमेन्स डे दशहरा को होता है, तो चलो फिर भी कैलेंडर तो मानते हैं, तो कैलेंडर को मानते हुए सबको विश कर ही देते हैं. So wishing you all a happy Women's Day and happy Holi as well to each and every one of you. So, it being a Q&A session, there should be hands raised. And if hands not raised, so hands are raised. Chalo. So these are obedient students, it seems. Okay. Okay, Hari bhai, please unmute them so that people can. Yeah, Aditi ji, please unmute yourself. हर हर महादेव. हर हर महादेव. महादेव, मुझे पता नहीं आज का सवाल एक्चुअली आपके लिए होना चाहिए या रश्मि जी के लिए, बट उनको ज्यादा जानकारी हो सकती है शायद, बट आई फील लाइक टू आस्क, इसलिए पूछ रही हूँ. रुद्राक्ष के बारे में है. तो रुद्राक्ष में हम लोग कहते हैं कि रुद्र का अक्ष जो है उससे रुद्राक्ष बनते हैं. तो ये पंचमुखी, एक मुखी, चार मुखी, ये जो इसके प्रकार है, और ये एक मुखी को ज्यादा महत्व है. व्हाई दिस डिफरेंशिएशन? वो है तो रुद्र का ही अक्षर ना, फिर उसमें इतना डिफरेंशिएशन क्यों? व्हाई ऑल दिस? इसका वैल्यू कम, इसका वैल्यू ज्यादा, ऐसा कुछ है क्या? ओके. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आपने एक बहुत अच्छा चीज कहा, लाइक यू सेड दैट है तो सब रुद्र के अंश ही, लेकिन फिर इतना वेरिएशन क्यों? मतलब आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. आई एग्जैक्टली आस्क द सेम क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. हो तो रुद्र के अंश ही, फिर इतने वेराइटी क्यों हो आप लोग? कोई एक मुखी, कोई पंचमुखी, कोई 24 मुखी, बिकॉज इट गोज अप अंटिल 24. ठीक है, तो ठीक है. अब देखिए, आपने जैसे कहा कि रश्मि जी कैसे भी मुझे पूछ चुकी है कि शी वांटेड टू टेक ए एंटायर सेशन ऑन रुद्राक्ष. आई सेड समय जब आएगा तब मैं बता दूंगा, और आपने पूछ लिया मतलब समय आ रहा है. सो एनीवे, शी इज वेरी वेरी ईगर टू टेल यू अबाउट दैट. सो उनसे सुनेंगे, लेकिन आपने मुझे पूछा है तो मैं आपको छोटे चीजें कुछ बता देता हूँ. जब वो पूरा एंटायर सेशन लेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी आ जाएगी. तो इतने वैरायटी क्यों? See, these represent all different dimensions again. एक मुखी जो होता है वो कई लोग मैंने देखा है कि धारण कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके गले में सही रुद्राक्ष आ गया, मींस यू गेट द ट्रू फॉर्म ऑफ सिंगल एक मुखी रुद्राक्ष अगर आपको मिल गया, वो नहीं काजूदाना वाला नहीं, नॉट दैट हाफ मून शेप्ड, नॉट दैट. सो इफ यू गेट अ ट्रू सिंगल बीड रुद्राक्ष और आपने उसकी स्थापना, मतलब you did the right puja and wear it. If you are a family person, within 15 days to 30 days you will leave your family and run away into the forest. उसका लक्षण ही वही है. एक मुखी मतलब it will always be focusing on one direction, it will go run away there. So वो योगियों को धारण करना पड़ता है. But I see many people buy it for few lakhs and wear it as a jewel. ठीक है, शायद उसकी स्थापना नहीं करते वो लोग, उस हिसाब से धारण करते, लेकिन फिर भी उसका असर तो होगा. इट विल हैव ए इम्पैक्ट ऑन लाइफ. सो दो मुखी जो हो जाता है, जो वैवाहिक जीवन में है, मतलब जिसे हर हरि कहते हैं, या तो फिर सॉरी पार्वती और शिव कहते हैं जिसको, वो जो फैमिली में है, जिनकी शादी हुई है अभी, दे कैन वेयर दैट इज गुड. दो मुखी जो होता है. त्रिमुखी जो होता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश को डिपिक्ट करता है. ठीक है. चतुर्मुख जो है, जैसे अभी हमने कहा, अभी जो जाप करने के लिए हमने कहा है कि चतुर्मुखी लेना है, उसको ब्रह्म
रुद्राक्ष कहा जाता है, वो भी ब्रह्मा के 4 सर के हिसाब से उसे 4 माना जाता है। तो ब्रह्मा की कभी भी कोई पूजा होती है तो उसके अंदर इसका धारण किया जाता है, या तो ईशान देव की जब पूजा होती है तो उसके साथ ये चतुर्मुखी धारण किया जाता है। पंचमुखी सबसे कॉमन है, जैसे आप नमः शिवाय का जाप करते हो उसी तरीके से पंचमुखी, इसीलिए उसका मायने है। ऐसे ही आता है छठा, 6 वाले जो हैं, वो जो 6 वाले जो हो जाते हैं उसमें ये किया जाता है कि जो रुद्र के एक गण है उसके नाम की पूजा की जाती है। ओके, फिर 7 जो आ गए, अगर आप किसी तरीके का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो ऋषि मुनियों से, वो सप्त ऋषियों के हिसाब से 7 वाला धारण किया जाता है। और इसके आयुर्वेदिक के हिसाब से भी बदल जाता है उसके स्वरूप जो होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते करते 24 तक जाएगा। देखेंगे रश्मि जी कुछ अच्छा बता सकते हैं उसके बारे में, आपने जैसे कहा, तो पूरा सेशन उनको लेने दीजिए, जो बच जाएगा हम बता देंगे उसके बाद। सो ये हो गया एक चीज। सो अलग अलग चीजों का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके घर में आपने देखा होगा, हमने कई बार दिया जलाते हुए भी, व्हेनेवर वी आर लाइटिंग अप ए दिया, वी आल्सो से कि इस पूजा के लिए 1 मुखी चाहिए, इस पूजा के लिए 5 मुखी चाहिए, इस पूजा के लिए चतुर्मुखी चाहिए, बिकॉज दे डिपिक्ट ए डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी फोर्स इन देम। उस तरीके का एनर्जी के लिए ऐसे सारी चीजों की इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, रुद्राक्ष बहुत लंबा और बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है। सो वी विल वेट फॉर हर। अगर आप लोग सब तैयार हो तो किसी दिन उनको बोलेंगे, शी विल बी टेकिंग अ सेशन ऑन दैट, कैसे रुद्राक्ष को रखा जाता है, मतलब कैसे शुद्धि कर सकते हो, कैसे उसको मेंटेन किया जा सकता है। सो शी विल टेल एवरीथिंग अबाउट दैट, बिकॉज शी हैज टेकन एटलीस्ट आई थिंक लाइक 3 or 4 सर्टिफिकेट्स फॉर दैट। So she can be a good person to give you all that as well, right? और अब जब आता है रुद्राक्ष की बात, उसको रुद्र का अक्ष भी माना जा सकता है। फिर मतलब आंसू जिसे कहते हो, वही ना, या तो और एक अक्ष का मतलब और भी एक होता है, रुद्र की छवि। रुद्र का अक्ष मीन्स उसकी जो छवि है वो इस रूप में आती है। तो आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप रुद्राक्ष उठाते हो, अगर आपने ये नहीं देखा तो कभी थोड़े रुद्राक्ष लेके आइएगा, एक ही बार मुट्ठी भर, मैं उसमें से एक निकाल दूंगा और आप में से उसके अंदर एक दिखा दूंगा कि देखो उसका अक्ष है इसमें, और आई विल चूज रैंडमली एंड यू विल गेट टू सी दैट। So that would be an amazing way of looking at it, because that your mind won't because मैं आप जो लेके आए हो उसमें से निकालूंगा और उसमें से आपको दिखा दूंगा जो आपको चाहिए उसमें छपा हुआ होगा। And some people have experienced that already, so so they are just laughing at that, because वो मेरे पास एक बैग में भर के लाए थे, तो जो जो मेरे सामने बैठा था जिसके जैसा चाहिए था मैंने उनको निकाल के दिखा दिया, बोला यही चाहिए था ना तुमको, ये देखो ये है, ये देखो ये है। It was, होता है वो, you all that you know is your hand should be knowing the frequency vibrations of those things। अगर वो समझ में आ गया तो उठा लेगा वो। So we'll do that। Anyways, रुद्राक्ष के बारे में उनसे सुनेंगे, because she want to talk about that, so I just don't want to drag it into this। Okay अदिति जी, but अगर ये सब रुद्र के आंसू के बारे में बात करते हैं तो मैं किसी दिन आपको रुद्र के अक्ष के बारे में, उसकी छाया जो है कैसी बनती है, ये रुद्राक्ष के ऊपर इतने सारे प्रिंट्स कैसे बन जाते हैं और इसी को क्यों माना जाता है, वो उसके बारे में किसी दिन बता दूंगा मैं आपको। ठीक, ओके। और नो अदर क्वेश्चंस? ओके, बट जो मैंने रश्मि जी को बोला था शायद वही हो गया। मैंने कुछ दिन पहले ही उनको कहा था कि थोड़ा समय है, मैं बताता हूँ, और देखो आ गया समय आपके थ्रू। सब आपकी लीला है मैडम। चलो, वी आर वेटिंग। Yeah, Kamlendra ji, please Mahadev. unmute yourself. प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं।
एक तो मेरे को ये जानना था, जैसे एक हमारे यहाँ प्रैक्टिस है गुजरात में कि हम जूते चप्पल है ना वो बाहर उतारते हैं चौखट के, क्या वो विधि सही है या गलत है? साइंटिफिकली भी तो सही है। नहीं वैसे गलत। सही है, लेकिन एक्चुअली मेरा कहना यह है कि भाई सवेरे जैसे हम उस चौखट की पूरी पूजा कर रहे हैं, वो कपूर का जो आपने विधि बताई थी, तो एक तरीके से वहां पे देवों का वास हो गया कि मेरे मतलब पूर्वजों का भी वास है, और मैं वहीं पे जूते चप्पल उतार के आ रहा हूँ। इसीलिए आप याद है ना जब मैंने कहा था, ये सारी चीजें बता दे तो आप लोग परेशान हो जाओगे, आपके खुद के घर के दीवार से परेशान हो जाओगे आप। इसीलिए मैं उसके अंदर जाना नहीं चाहता। एक ही चीज बताना चाहता हूँ, ऊपर अगर देवी देवता रहते तो नीचे कौन रहता है? इसीलिए चप्पल उनके पास रखा जाता है। अच्छा, अब आगे मत बुलाओ, नहीं तो घर की पूजा यू विल बी इन ट्रबल। क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा पैर बाहर रखूं कि अंदर रखूं, कैसे। डोंट गो इनटू दैट। सीधा सीधा बात यही है कि देखो, जैसे हम ये करते हैं ना, देखो वो भुवनों का जैसे डिवीजन हुआ है ना, वैसे ही होता है वहां पे कि पितरों का वास माना जाता है। कहाँ? ऊपर की तरफ ना, उसके ऊपर वही भैरव और महागणपति जो है उनको बिठाया जाता है। तो नीचे का जो श्रेणी है ओके, वो निम्न स्तर के हैं, इसीलिए उसको जूते आप बाहर ही उतार के जाओ। दैट इज गुड बोथ साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली एज वेल। लेकिन हम मानते नहीं है। लेकिन तो ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन जब भी अगर आप कोई पूजा करते हो, जैसे हम घर में देखिएगा, दिया जब जलाते हैं अगर द्वार के पास, उस समय में जूते को साइड कर दो, पहले पानी छिड़को उसके ऊपर। और साउथ इंडिया में तो आप देखे होंगे, यहाँ पे तो मुग्गू डालने का बहुत ही अच्छा प्रचलन है। दैट इज सो गुड। वो हम नॉर्थ में, ईस्ट में नहीं देख पाते, लेकिन साउथ में बहुत अच्छा है कि एवरी डे दे स्प्रिंकल वाटर एंड दे ड्रॉ दैट थिंग। रंगोली हो गया। बहुत बहुत ही अच्छा ये है। एंड ऑल आर जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स। ये बना तो देते हैं लेकिन उस जियोमेट्री को नहीं समझ पाते। अगर जियोमेट्री को समझ गए ना तो ये फिर उसके अंदर डिजाइन ही बदल देंगे ये लोग। रंगोली डाल तो देते हो, लेकिन कुछ लोग अलग अलग तरीके की रंगोली डालते हैं। इट्स अ जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैज अ फ्रीक्वेंसी, ए वाइब्रेशन. Why is it made in front of your house? It is made in front of the house so that the vibration, like the frequency is invoking good qualities into the house. तो फिर जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए फिर हरि भाई को बुलाना पड़ेगा, वो कुछ बताएंगे फिर। लेकिन कमलेंद्र जी, जूता बाहर उतार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूजा करने के समय थोड़ा इसको हटा दीजिए, पानी छिड़क दीजिए। अगर आपके पास गंगा जल है छिड़को, नहीं तो अगर गोमूत्र है तो छिड़को। दैट इज गुड। सो क्या हो जाए, शुद्धि हो जाता है। उसके बाद आप जब कर्पूर आरती करो या फ्लावर वहां पे लगाना है लगाओ, इट्स नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, नेक्स्ट। अभी गुरुदेव, जैसे अभी आपने बताया ना, ऊपर 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 वो है, वैकुंठ के बाद में शिवलोक आ गया। अब शिवलोक तक तो मतलब, क्योंकि ये सारे के सारे उसमें समयबद्ध ही भी दिया गया है। जैसे पृथ्वी लोक पे तो टाइम एंड स्पेस बहुत है, लेकिन इनको भी एक समयबद्ध दिया गया है। उसके बाद ही क्या सब कुछ तो होता है, या शिवलोक के आगे भी कुछ है? चलो मतलब उसको भी कोई समयबद्ध दिया गया है क्या? अच्छा, तो कितने लोग गाना गाते हो? हाउ मेनी पीपल सिंग? इस ग्रुप में तो सभी गाते हैं। सब गाते हैं ना, मतलब कुछ लोग मन ही मन में गा लेते हैं, कुछ लोग लोगों को सुना के गाते हैं, और कुछ लोग गाते तो लोग चुप करा देते हैं उनको। सो वी हैव वैरायटी ऑफ पीपल आल्सो। अच्छा, कितने सुर हैं उसमें? 7। 7। क्या क्या है? सारे गामा पा धा नी सा। इसको किसने बनाया? शिव। अब बताता हूँ क्यों लोगों के ऊपर शिव को बिठाया गया है। आपने जो पूछा कि बैकुंठ है, गोलोक है, उसके ऊपर भी लेके जाके शिव को बिठाया गया, और उसके ऊपर है क्या है? तो शिव का एक नाम नटराज भी है। शिव का कई नामों में ऐसे नाम आता है जहां पे ये कहा जाता है कि पूरी जितनी सृष्टि की, जो संसार की जितनी वाद्य यंत्र, जो शब्द और ध्वनि जो हैं, वो सब भी शिव के पास से ही शुरू हुआ। तो ये जो सा रे गा मा पा धा नी सा आप सब सुने हो, उसका मतलब क्या है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? कहीं सोचे नहीं ना? अब बत्ती खुलेगी, देखो, यू विल बी एनलाइटेंड ऑन दैट ऑल्सो। जो सा शब्द है, स, वो रिप्रेजेंट करता है कि देयर इज नथिंग। स से पहले कुछ है क्या? नहीं है ना, तो स से ही शुरू होता है, उससे पहले कुछ भी नहीं है। तो स मतलब साकार ब्रह्म, स से साकार ब्रह्म शुरू होता है। उसके बाद क्या है? रे। रे से ऋषि, जिन्होंने, मतलब साकार रूप में कौन कौन आए? ब्रह्मा विष्णु महेश आए। उनसे कौन प्रकट हुए? उनसे प्रकट हुए ऋषिगण, ऋषिगणों से प्रकट हुए देवतागण। ठीक है, तो आ गया सा रे ग। ग का मतलब गंधर्व ना, गगन, जो आकाश तत्व में देवी देवता है, इंद्र का जो ये है वो शुरू होता है वहां पे। सा रे ग। उसके बाद माँ। अगर राजा है इंद्र तो उसके लिए प्रजा भी होनी चाहिए। कहाँ पे राज करेगा? तो हुआ मही, म से हुआ मही। मतलब जैसे आप पृथ्वी को कहते हो मही, वैसे ही अलग लोगों को भी मही ही माना जाता है। तो हो गया सारे गा म। उसके बाद पा। उसको चलाने के लिए कौन चाहिए? प्रजापति। तो कौन आ गया? प। उसके बाद क्या आया? ध। अच्छा, प्रजापति को तो चलाना चाहिए, लेकिन कैसे चलाना चाहिए? धर्म के साथ, इसीलिए ध, सारे गामा पा ध। उसके बाद क्या हुआ? नी। नी से क्या है? देखो लास्ट तक आ गए हो। नी से मतलब जो राजा प्रजा जो भी है, इन सारे चीजों से निवृत्त होके निराकार में फिर लीन हो जाना, फिर साकार शुरू होता है। कैन यू सी द साइकिल? इसीलिए स से शुरू होके स तक जाता है। अब बताओ, हु इज बियॉन्ड दिस? द वन हु क्रिएटेड दैट। सो इसीलिए कहते हैं जितनी भी सृष्टि की रचना हो गई ना, वो शुरुआत उसी से होके अंत उसी से हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम साकार ब्रह्म टू सृष्टि कैसे हुई, एवरीथिंग इज देयर इन दैट सारे गामा पादा निसा। दैट्स व्हाई विद दैट 7 अल्फाबेट्स ओनली यू आर एबल टू क्रिएट सो मेनी सॉन्ग्स, सो मेनी म्यूजिक। कैसे कर लेते हो? सो दिस इज, जब स्वर और क्या कहते हैं उसे, वो शब्द सूर्योदय जब होता है ना, तब जाके आपको ये सारी चीजें समझ में आती है कि ये साथ ही क्यों है और ये साथ का मतलब क्या है। तो आज के बाद जब सारे गामा पाधा नी से कोई गा लेंगे ना, आपके सामने ना पूरा सृष्टि बन जाएगी। और देखो, सृष्टि से लेके प्रलय तक सब वही है। तो उसके ऊपर कौन? आपने कहा जब तक साकार है तब तक शिव है, उसके ऊपर जो है वो निराकार है। अब निराकार की व्याख्या आप कर नहीं सकते क्योंकि शब्द नहीं है उसके लिए। सो वी कैन नॉट से हु इज अबव दैट, लेकिन है, जो है वही आप हो, वही मैं हूं। बट वी हैव बाउंड आवरसेल्व्स, वी आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स फ्रॉम दीज 7 डिमेंशंस। ये 7 तरीके के हम खेलते जा रहे हैं। और अगर मैं आपको पूछूं अभी आप कहाँ हो? बहुत मुश्किल है इस चीज का जवाब देना। राइट, मुश्किल इसलिए होगा कमलेंद्र जी क्योंकि हम अपने आप को उस स्तर पे नहीं मानते। जिस दिन हम उस स्तर को समझ गए, मतलब क्या मैं नी में आ पहुंचा हूं, या मैं अभी भी स में हूं, या लास्ट स तक पहुंच चुका हूं, या अभी भी मैं प्रजापति या इंद्र बनना चाहता हूं। सही बात। क्या मैं धर्म के साथ चल रहा हूं? सो ये सारे चीजें ये 7 शब्दों के अंदर वर्णित है। और मैंने आपको उसका, जब सूर्योदय का जो प्रोसेस है ना, उसका सिर्फ मैंने एक टिप बताया अभी आपको कि ये सारे गामा पादा निसा का अगर मैं संपूर्ण रूप से व्याख्या करने लगूं ना, आप बोलोगे आज तक क्या जाने थे इसके बारे में। वो जानने वाली चीज नहीं है। वो ऐसे ऐसे चीजें इसके सामने, आप रोज उसे देखते हो लेकिन आप उसके पीछे की व्याख्या नहीं जानते। तो आज के बाद जब कोई पूछे आपको कि
कैसे होता है ये सब? बोल देना ये से होता है। क्योंकि सुर जो होते हैं तो साकार हुआ, ऋषिगण आए, वो गाना गाने लगे, मतलब वेदों का पाठ सुने। वो सुनने के बाद आ गए गंधर्व, सारे गा, और गंधर्व के साथ आया देवराज इंद्र। उसके बाद आए मही, मतलब जितनी भी सृष्टि की रचना थी वो जिसके ऊपर राजा बने। उसके बाद वहां पे कोई सब डिविजन होना चाहिए, उसके लिए बने प्रजापति। फिर प्रजापति के बाद धा, कैसे चलाना चाहिए धर्म के साथ। उसके बाद क्या हो गया, सब धर्म के साथ चलोगे तो फिर सारे चीजों से निवृत्त होके फिर साकार से निराकार तक पहुंच जाओगे। तो इसीलिए आप गाते हो ना, सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा, मतलब यू गो दैट वे, अगेन यू रिटर्न बैक और यू जंप फ्रॉम देयर। ओके। लेकिन कुछ लोग उसमें भी है, सारे गा रे गा मा पा, इसमें रह गए, उसी में बजाते जा रहे हैं बस। ओके, सो ये हो गई। और एक चीज और बताइए गुरुदेव, एक ये था, थोड़ा सा स्टडी करना शुरू करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले क्या करूं? वेदों से शुरू करूं बिल्कुल, क्यों नहीं। या मतलब एक्चुअली मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, वेद पुराण और ये सब चीजें हैं जैसे उपनिषद, तो शुरुआत किससे करनी चाहिए अपने को? ये बहुत बड़े बड़े चीजें हैं। मैं जी। आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, इसको उसको एक को समझ लिए तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हो सके तो शुरुआत कीजिए मांडुक्य उपनिषद से। ओके। अगर मांडुक्य उपनिषद पढ़ोगे उसमें सिर्फ 12 श्लोक हैं, लेकिन उसकी व्याख्या बहुत लंबी गई है। ओके। और उसमें ऐसे कहा जाता है कि एवरी वर्ड इज ट्रूथ। उसको अगर आप सही तरीके से समझ जाओगे तो आपको लगेगा कि एवरी वर्ड इन दैट इज ट्रूथ एंड व्हाट एवर इज रिटन इज ट्रूथ। ओके। तो हालांकि पूरा वेदों का निचोड़ अगर बोलोगे तो उसी एक में आ गया है, तो वो एक ही पढ़ लो। ठीक 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 है, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मांडुक्य उपनिषद। क्योंकि अभी पीछे कुछ दिन से अर्ज हो रही है अंदर से बहुत ज्यादा कि कुछ पढ़ा जाए इस तरीके का। पढ़ो, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? जब अवेलेबल है, व्हाई नॉट, यू शुड। ठीक है, सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। जब उसको सब पढ़ने शुरू करोगे, आप जीवन को पढ़ना शुरू होता है। वैसा लगता है कभी कभी, अरे दिस इज व्हाट इट इज, ओ दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, दिस इज, सो दैट्स हाउ इट इज। उसके बाद बहुत सारी व्याख्याएं दी गई है उनकी। सो गौड़ाचार्य जो है, गौड़ापादाचार्य जो है, उनकी अगर आप टिप्पणी पढ़ोगे उसके ऊपर, तभी जाके आपको वो समझ में आएगा। तो बिल्कुल वो दोनों को साथ साथ पढ़ो, सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। इंग्लिश में भी मिल सकता है मुझे लगता है। सो यू सर्च इट, और बट सर्च इट विथ, अगर आपको कहीं से मिले इनके साथ, गौड़ापादाचार्य के साथ अगर मिले, सो रीड दैट बुक, तभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। बस 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 उतना ही, उतने में ही ब्रह्मांड घुमा दिए कमलेंद्र जी आप। थैंक यू। धन्यवाद। Thank you, Kamlender ji. Aliva ji, please unmute yourself. हर हर महादेव। हर हर महादेव। It's very coincidental, but I think everything is planned and designed when you are present, right? So my first point was on Rudraksha, that you had asked us, or rather told us that, you know, how to do the Abhimantran of the Rudraksha Mala when we procure one. Now that I got that 4-mukhi Rudraksha, I wanted to check that, you know, if you teach us how to do it, or take a session on that. And Aditi asked almost, you know, close to something on Rudraksha. So I don't know if both can be clubbed or you take an exclusive session. But that would be helpful, because it always comes to our mind that, you know, when we procure something, we cannot immediately probably take it to you to get it empowered. So okay. तो अभी फिलहाल जो आपके पास जो है वो तो मंत्र के साथ, ईशान मंत्र के साथ आपको
वो आपका क्या कहते हैं, केसर के साथ यू हैव टू रब इट एंड यू हैव टू टच दैट. बट एनीवेज आई विल टीच यू ऑल कैसे एक माला, कोई भी माला अगर आती है तो उसको कैसे अभिमंत्रित किया जाता है, वो प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, सरलतम प्रोसेस बता दूंगा, सो दैट you all can do the same thing what I do. We'll try. We'll try. ये देखो यही तो गड़बड़ कर दे, जैसे अभी अदिति जी ने कहा कि रुद्र का तो अक्ष है लेकिन वेराइटी रूप में आते हो. So anyways, that is there, Aliva ji, that is there in my agenda, like how to bring that forth. And वो एक है और एक, no, I'll discuss that in Mahanirvan only. Okay, what else? The other one was again, of course, Kamlendra ji's things are very profound. There was this urge since we did the run up to Shivratri. We used to connect every day in the evening, and there used to be a lot of silent moments. But then it eventually started that शिव महापुराण के एक कथा आभा जी ने कुछ शेयर किया and so on. So either to read or to hear from you, and to hear from you is the ultimate. Is it not possible that we kind of cover a few as part of our satsangs? And देखो अलिया जी, मैंने एक प्रोसेस शुरू किया था, 10 में जाके अटक गया वो. You remember? Yes. So बाकी कब सीखोगे? You tell us. I'm sure all of us are ready. Or you check our readiness and you start. But that urge is like really, So Vigyan Bhairav Tantra में we still have 102 to go. We have just reached 10. 102 more to go. And within that 10 itself, like what kind of experience you people started having with those things. The way it was described, the way you started experiencing. I still remember, if anybody goes and listens to the second, not the first, everything has a very typical thing in that. But if you listen to the second, it's some other dimension altogether. That is there. Then आपने जो कहा अलीवा जी, that is really good. शिव महापुराण का, उसके लिए मुझे एक किताब खरीदना पड़ेगा शायद. So let me see if I find one. So Aditi ji has. So rather than that, I think like we should take over Abha ji, Sudha ji, Aditi ji, and all those people, those who read Shiv Mahapuran. I think Vidya ji also should be there. So these people are avid readers of such things. So we should pull them up. इनको लाके बोलना चाहिए कि ये पढ़े और हम सुने. जहां समझ में नहीं आए हम समझा दे. अच्छा, so Aditi ji has it but does not read it. Okay, fine. No, there are so many things, Aliva ji, because I'll tell you why I don't go and touch these books, especially on general terms. Generally मैं वो कोई भी देखो, आप रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन सारे चीजों को मैं as a pointer I don't take it and speak about that. There is a reason. Reason is ये सारे चीजें available है. You can get it, you can read it. आप पढ़ सकते हो इस सारे चीजों को. लेकिन अभी जो मैंने जैसे बताया अभी आपको, ये 7 सुरों के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, जाके ढूंढ के लाओ एक बार. So I want to bring the things that has been eradicated from this place. Extinct हो गए हैं जो सारे चीजें. ठीक है. But surely we will try that also. Why not? But I was more keenly interested in Vigyan Bhairav, completing that. उसके बाद और बहुत सारे हैं उसमें.
विज्ञान भैरव खत्म होते होते there are certain other things that I wanted to start, but let's see how you people get ready, because I don't think like any one of you is practicing or any of those 10 things. So now just tell, is it my fault not telling you people all that, or the reason why I stopped that is because it had become like a every week, oh, something new is coming up. No, new will come up, but I told like you don't have to leave. Once you get connected to one process, continue that. One is enough in that. You don't need to know all the 112. Zarurat hi nahi hai aapko. But what we do, this is good, this is good, this is good. You get excited. And then after 4 days, that is somewhere, I'm somewhere. So then I said, okay, so you people don't want that. Then what did I do? I started giving you processes after processes after processes. अभी भी 3 बाकी है ना. मैं बोला यही करो. If you cannot do that, do this. क्योंकि उसके बाद जो है वो तो करोगे ही नहीं. So at least whatever it is available, you should do that. Because there are really some beautiful tantras that everyone should learn. Every one of us should learn. मतलब नाम तंत्र से डर नहीं लगना चाहिए. वो सारे चीजें एक से एक बढ़कर चीजें हैं. क्योंकि जब पार्वती पूछती है शिव को, like when she asks that in the Satya Yuga they have the Vedas, श्रुति, फिर आता है स्मृति, तो कहते हैं उनके लिए वेद था, जो सत्य युग है उनके लिए वेद था, जो त्रेता युग थे उनके लिए उपनिषद थे, जब द्वापर युग आया तो उनके लिए सब जो जितने सारे ये है ना हमारे, क्या कहते हैं उसको, पुराण है, कलयुग के लिए क्या है, आवाज ही कह रहे जाप माला, वो भी सही है, नाम जाप करना, एक वो सही है. दूसरा शिव ने कहा तंत्र, क्योंकि कलयुग में हमारी क्षमता उतनी रहेगी ही नहीं. वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लाइफ स्पैन, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम टू डू ऑल द थिंग्स दैट आर टोल्ड इन द वेदर्स. वेदों में, उपनिषदों में जितने सारे चीजें, द नियम, जितने सारे नियम लगाए रखे हैं, द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर देयर, वी कैन नॉट डू इट. सो व्हेन वी कैन नॉट डू इट, व्हाट इज लेफ्ट आउट? या तो भगवान के नाम, जैसे नाम जाप करते हुए चले जाओ उसके साथ, और इफ यू रियली वांट, यू आर ए कर्मवीर होते हैं ना, लाइक आई वांट टू डू समथिंग, नॉट जस्ट सिट एंड चैंट द नेम, उनके लिए तंत्र. So there are beautiful processes actually. एक ऐसा मंत्र है जो 7 अक्षरों का मंत्र है, just 7 words, only 7 words. You can tailor make that mantra as per your need. And Shiva says there is no mantra like this. And if I have to say, this is one of the most amazing ones, the topmost level ones. मैं वो सिखाना चाहता हूँ. I want to teach you that. Will you? वो एक मंत्र is, it is having the power कि if you are chanting that one mantra, all the planetary movements जो force होता है ना आपके ऊपर, it will not work. Anyone does anything on you, it won't work. Your past karmas won't work. एक मंत्र है.
वो कहते हैं कि शिव पार्वती वो कहते हैं कि अगर कोई भी ये मंत्र को जाप करता है, इफ somebody is chanting this mantra, none of these things can touch them, including the Betalas, the Bhairavas, and let alone all the निम्न स्तर के जितने सारे हैं, कोई छू नहीं सकता आपको एक मंत्र में। ऐसे ही दे दूं मतलब किसी को भी, तो फिर माइक लगा देता हूं बाहर। ऐसे नहीं जाते। But I am willing to teach. I know there are some people, those who will do it. I am ready to teach, but because if I don't teach that, I just take it away along with me. What is the, it would be like wasting myself coming here. But for that, somebody should be ready. What is your readiness? I told you already. Readiness का मतलब क्या होता है? Readiness means no, not even a single iota of doubt on that. Let alone me. मेरे ऊपर डाउट करना तो गए तुम कहीं से भी। उस मंत्र के ऊपर भी डाउट नहीं कर सकते आप। और उसी मंत्र के साथ if you change one alphabet in that, I will teach you that also, कौन कौन से अल्फाबेट बदले जा सकते हैं। You change that and everything changes for you. From starting creation to destruction, everything is there in that one mantra. और ऐसे एक नहीं है, अनेक हैं। आप कितना सीखोगे? How many are you willing to learn? एक काफी है, one is enough. जैसे हमने कहा ना, बटुक भैरव का एक मंत्र काफी है आप लोगों के लिए। But you still, as I said, no, if I have a sweet stall and there are variety of sweets, you should taste those things, right? And why so many mantras? Why so many processes? Because at one go, you might just come to a space by doing that job and you realize that this has ultimately liberated you to a space where you know yourself now. So that's what we want to do. But good, I have a handful of people. You remember the initial days itself, I said, अगर गुरु सही होगा तो शिष्य भाग जाएगा, अगर शिष्य सही नहीं है तो। और अगर शिष्य सही होगा, गुरु गलत है तो गुरु भाग जाएगा। अब देखो टिका हुआ कौन है। ऐसे कई आएंगे कई जाएंगे, बिकॉज हर कोई हमें समझ ले। हर कोई महादेव थोड़े ही ना है। That's why I say it might be easy to comment. It might be easy to pass on a statement. It might be easy to even tell anything about me. But can you withstand me? Can you be there? What I am going to do? बैठ के बताओ। कहानियां हर कोई सुना देगा। बैठ के बताओ बोलता हूं मैं। और समझ में आ जाएगा कि खाली बातें हैं, कहानियां हैं, या सच में कुछ है। ड्रामा तो बहुत होता है। बट आई एम ऑल्सो सीइंग, लाइक देखते हैं आप भी कितना टिक के रहते हो। क्योंकि सुर में सिर्फ अगर एक ही अ लगा दो ना, वो असुर हो जाता है। और वो अ क्या है? अहम है। वही आपको असुर बना देगा। और आपके अंदर वो चला, लाइक इफ दैट हैज गो ऑन इनटू यू,
then you cannot be stand be anyways. रहोगे ही नहीं, आप टिक ही नहीं पाओगे. So I'm waiting for those people, those who just stick back. कोई बात नहीं, you can go around, roam around because एक ही बात कहे ना मलिका जी, हम मंदिर के देवता नहीं है, हम लोग स्मशान के देवता हैं. अब किधर भी जाओ वापस से वही आना है. As far as you want to run, आप चाहे ग्रहों की नक्षत्रों की गणना कर सकते हो, आप चाहे बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आना तो हमारे पास ही पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव की कितनी पूजा कर लो मरना तो है ही. क्योंकि एक लौता सत्य संसार में जो है वो है मृत्यु. आर यू रेडी फॉर दैट? Because if you're ready to die, what else can make you fearful? कौन डराएगा आपको? और सारा डर जो है ना वो जीवन के साथ जुड़ा हुआ है. जीवन के बाद कौन सा डर है बताओ? So there is nothing left out. So all that is, you remember Aliva ji, I used to tell a story, you have to die when you are alive to get your freedom. So that's the same thing. वैसा ही है. फिर किसी ने मुझे पूछा था अलीवा जी, फिर then why do you don't stop all these things? Why do you want to continue? I said it won't take a fraction of a second for me to decide. I can close it right now. You cannot do anything on me. मुझे कुछ भी नहीं कर सकते आप. But why are you doing all these things? I say like क्योंकि जगन्नाथ क्षेत्र से हैं, उसको पतित पावन कहते हैं. जो पतित है उसको पावन बनाना हमारा काम है. So all that has, पतित का मतलब क्या होता है? The one who has moved away from path. हम उनके लिए बैठे जो रास्ता ढूंढ रहा है. So that you find your way, you get back home. Okay. So just be there, be ready. हम भी देखना चाहते हैं कि कौन टिका हुआ है. Let's see. ऐसे ही तो नहीं दे देंगे हम. हाँ, जो सबको दिया जा सकता है वो बता देंगे आपको. You just do that. Whatever is good for you, whatever is easily available, you do that. No problem. But beyond that, there are certain things that I will not just give away. That's beyond my own rules. मैं ऐसे ही नहीं दे दूंगा. And nobody can force me doing that. Nobody can buy that. Nobody can force me to do that. It's not in your realm. वो आपके हाथ में ही नहीं है. आपके हाथ में सिर्फ एक ही है, टिके रहो. बाकी कुछ भी नहीं है आपके हाथ में. Oh, so I'm moving somewhere else. Yeah, Aliva ji. So surely all those things will be coming up and we'll be taking up one by one things. और उस चीजों में जाने की भी जरूरत नहीं. उसके अलावा भी इतने सारे, like apart from that there are so many things you cannot take over. सिखाएंगे. यही सब नहीं सीखे, त्रिवाचा क्या सिखाएंगे आपको? त्रिवाचा का मतलब जानते हो? नहीं सुना कभी? कुछ लोग सुने होंगे. त्रिवाचा वो प्रक्रिया होती है जिसमें देवता को सामने प्रकट किया जाता है और उनसे 3 वर लिए जाते हैं. आप कहते हो ना देवता सामने आता नहीं है, सामने आएगा और 3 वर भी देके जाएगा आपको. वो त्रिवाचा प्रोसेस होता है. सीखोगे? नहीं, कहानी नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, लेकिन these are the stepping stones before that. ये सारे चीजें करते 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 जाओ.
जिस जिस दिन जिस जिस चीजों के लिए योग्य बन जाओगे उस दिन मैं सिखा दूंगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी योग्यता बढ़ाओ। सो व्हेन एवरीथिंग इज, देखो आज सारे लोग वो रुद्राक्ष रुद्राक्ष के बारे में बोलने लगे, सो उसका समय आ गया, इसका मतलब दैट्स हाउ इट इज। ऐसे मंत्र हैं जो शिव को आपके सामने प्रकट कर सकते हैं। देर आर विधिवत रूप से है। These are all, I'm not just throwing stones in darkness, neither I want you to be blind and just believe what I'm saying. I am saying, I am giving you one by one process. You do that, and if you don't reach that day, catch hold of my collar, drag me on the street. कि बेकार की बातें कर रहे थे तुम। You are all telling all the stories. मैं तैयार हूं उसके लिए, आप तैयार हो क्या? Are you people ready to be into that space? मुझे उतना कॉन्फिडेंट है, आई कैन टेल यू, मेरे मुंह पे थूक थूक के चले जाना, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। बट आर यू? मैं ऐसे कह सकता हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मैं क्या करता हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। सो किसकी तैयारी चाहिए? मेरी तैयारी। लोग आके मेरा टेस्ट लेते हैं, मैं पूछता हूँ तुम वो लायक हो क्या मेरे टेस्ट लेने के लिए? और मैं जादूगर मत समझो कि हाथ से कुछ ऐसे निकाल के दे दूंगा आपके हाथ में, मैं वो नहीं करता हूं। हाँ, मैं आपको आपके अंदर से निकाल के दिखा सकता हूं दैट यू आर दैट अल्टीमेट। आप में मुझ में कोई फर्क नहीं है। दैट्स माई अल्टीमेट गोल। द डे यू डोंट सी एनी डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, द डे यू डोंट सी एनी डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट डिवाइन, दैट्स द ग्रेटेस्ट मिरेकल दैट आई कैन एवर स्पीक ऑफ। बाकी सब इज ऑल ड्रामा। But you know, like while going to the picnic, you sing, you dance, you have some snacks. So these are all these arrangements. Refreshments, jo Hari Bhai kehte. So these are all refreshments. Yeah. So sorry for going there, but I wanted to make some things clear. ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, आप कुछ भी कर लो। And the most funniest part is, you think I don't know. आप कर लोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। That's the most amazing thing that I can ever think of. Thank you. Yeah, Aliva ji, please go on. That's all, Madhu. Okay. Thank you. Thank you for all the processes, especially the Ishara process. I think no, that should be done by every child, Lekin Hari bhai, like when are you getting those malas? I'm still waiting, ma'am. Okay, just check with Rashmi ji once, because a few of my friends are now behind me. Every day they meet me, so they are catching hold of me. Where mala kab aa rahi? Mere bete ke liye mujhe karna hai. I want to do for my son, my daughter, and some grandparents want to do for their grandchildren now. I said, very good. If you are able to do that, why not? I will let you know, Manju. But something amazing has happened, Hari bhai. Just by listening to this, I can see like few of the youngsters, those who are just attending like this exams right now, they have started lighting up diya at their home and they are sitting and chanting the mantras. I said, this is done. They never knew anything about it. Now all those are sitting, and I'm really happy about that. That those people are so eagerly doing that. And it is not that they're doing it out of fear. The way you told that, and I feel like when I started doing it on the first day, I feel like doing it more. Can I do it more? I said, go ahead. So that is something really good. मुझे पता था तो पहले ही दे देते थे सारे बच्चों को. And that's okay. Still they can do that part. So Aliva ji, as we have already discussed on that day, you can start it. अगर आप शुरुआत ऐसे ही नॉर्मली करना चाहते हो, मानसिक रूप से कर लो, because March 20th is going to be शिवरात्रि again. ये महाकाल शिवरात्रि उस दिन है.
So by that time, I believe everybody will be having the Rudraksh Mala. So you people can start that process on that day. That would be good day to start. Or else, if some urgency is there, start it on a Monday. I started, Madhuri. This Monday. Started and the mala, I got it. Okay. So that's why I started. Okay, fine. No problem. So very soothing, powerful. I mean, for the kid is fine, but you empowering the parent to do it also is a big blessing. Because many a times we face the same problem. Na? Like we would like to tell our kids, but our kids, we don't know whether they will do it or not. And some kids are so small that they cannot do. So in that case, it's a good way. Na? I think like if a parent is doing it, the kid is getting twice blessings. One is the blessing of the divine and the blessing of their parents. Right? So, and while doing it for the kid, the parents have an inner satisfaction of another thing, that I am absolutely able to do something for my kid beyond this world. And the second thing, while chanting the calmness, the soothingness that comes to them, it becomes also meditation for them as well. So it's a good process for all. This mantra should actually be introduced into schools. Anyways, I was willing to talk to Jhansi ji so that she can first implement in her school in that way. Okay. Thank you, Aliva ji. Thank you so much. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Thank you, Aliva ji. Suma ji, please unmute yourself. Hello. Yeah, are you able to hear me now? We are able to hear you now. Please tell. I don't know, after all these divine discussions, I don't know whether I can ask this regular question or not. But no, that's what now we say now. There should be some persons like who can actually get us know like whether this is ground, that is earth, that is sky. So we should know all that, na? Or else we should have removed that bhu word from the Gayatri mantra itself. Actually, there are a couple of questions, so I don't know how many I will ask today. Because last time also I ended up with one only. You have some time, so you can ask. So let us see if how far we can go. Dhavalji wait karenge, unka koi problem nahi. He is having a lots of patience, so he can sit and listen to you. No problem. Now ask. Okay, so first one is in one of your sessions you said like dreams are remnants of accumulation of things of the day. Okay, so that means it's in our creation basically, right? But sometimes those dreams come true also, and if these are good dreams, then we are happy. But if they are bad dreams, means are bad or sad dreams, and if they happen in reality, then we feel like, right? So but if we don't, usually we don't think bad about something or sad about something. Means some things we think, but like for example, if I can say like to take my dad's thing, actually, I never thought like, I never have any, not even a single 0.0001% of the thought also about his thing. Okay. But suddenly before he passed away, like before 4 days, so I got a dream and whatever I have seen, everything exactly happened. But if it's the accumulation of our things of the day, or if it is our creation, and if I don't have any such thought, how did I get that dream? And it's like, what to... Because after that I stopped sleeping also. Like even in my sleep, I was like fully aware. And if some dream is going to come, I used to say some dream is going to come now. I should be like, only after meeting you, means after listening about you first time, I could sleep peacefully after like 5 years. After that. So without having any thought, from where did it come? Without any thought, where did it come? Okay. Because that's what we said, like these are the accumulation of the things of the day. So dreams are accumulation of things of the day. But if we don't have any thought, like, because always my mom is sick, so always used to fear about her, but not even a single doubt about him actually. Absolutely. So
As you rightly said, Sumaji, in the beginning itself, you like surprises? Yes. All of you like surprises? No, you don't like surprises. You only like surprises that you like. True. The other things you call as accidents. Yes or no? जो आपको समझ में आता है, जो आपको अच्छा लगता है, ah, very good surprise. Now you are carrying a glass, water drinking glass made of glass, and it fell from your hand. Suddenly slipped and fall. You don't call it, wow, what a surprise. You say it's an accident. So that means what you like is a dream, what you don't like is a nightmare. Yes. Right? Yes. So now coming back to your question, like if all the things that I'm seeing is an accumulation of the things that I have seen throughout the day, and it becomes the cloth, it becomes the fabric of my dream, then why I see certain things that I have not even thought of? यही है ना सवाल आपका? Okay. First and foremost thing, we understood dream. Simple dreams that we see, we are seeing many things. Out of that, those who have caught our attention, they come together, accumulate, they create a new story. And that's how you dream. Now, when coming to the dreams that you have not thought of, especially I will start with one thing, that how to differentiate between a thing, means if it is a dream or it is something that you are in another realm altogether where you are seeing it. Okay. So first thing, why I'm speaking of another realm? Unknowingly, at times when you are in your dream, you are anyways transcending time and space. While you are going to dream, you are transcending both time and space anyways, because everything is being created in a fraction of a second. And whatever you want to create, you are creating it. From where are you getting the space, where you are getting the time? But when you are in the dream, you start seeing it is day or night. But suddenly you are seeing that you are on the top of a mountain. The very next day you are sitting in your sofa. So that means time, distance, space, everything is taken care of, like it is gone. In your dream, nothing works. But in your dream state, when you go into a deeper sleep, you even transcend that space where these visualizations of only the surrounding things is showing up. तब क्या होता है? Then you start seeing the unfolding of the next thing. इसीलिए, when you might have heard about people, those who call them as like they have the sixth sense, they can see the future, what is coming, what happens to them. It's just like this, Sumaji. It is happening to them unknowingly, but there are yogis, those who have done it knowingly as well. How did they do that? It is again coming into the realm of deep meditation, जो समाधि के स्वरूप में आता है. एक स्तर पे आता है जहां पे आपका मस्तिष्क काम करता है. Your brain activity is still going on, so the activity is creating images in your brain, and you are seeing it as a dream. Now my question is, when the eyes are closed, who is seeing the dream? Who is able to see that the mental activity is going on? आंखें तो बंद है, फिर कैसे देखते हो आप? So who is the seer here? So can you see from here itself, you can know that you are not the body, you are not the eyes only that sees, it is beyond that someone is there who is seeing it. और इस dream तो दिखाई नहीं देते ना आंख बंद होने के बाद. So that means what is happening is still there is a distance between the mind and the person who is seeing. He is able to see that. Now the next thing it does is even discards the mind. It's just like this. You might have seen in your houses, oh, there is something behind you only. You have a window, okay? And that window has glasses, and there is a sunlight that is falling from outside. So if you just close the window, it has a layer on that, it will stop some amount of sunshine. Yeah. And there are again transparent ones through which light can permeate. And then there are dark, like what we use as like people in the US, and these people who understand it much better, they use thick curtains, right? For the darkness of the room. Even in India, everyone is using it right now anyways. So there is a dark curtain and there is a net type mesh curtain. So what is the difference between these two things?
One is allowing something, the next when you put it down, it is closing it down completely. So वैसा ही जब you are going into a space where you are not even connected to the first and foremost thing happening, you are disconnecting with your body. Second thing, what is that happening? Your mind is still active, you are seeing the dream. When you disconnect from the mind also, you don't see a dream anymore there. वहां पे कोई सपना नहीं देख रहे हो आप. You are actually going to a space where the designs of the future are being seen. आगे चल के क्या होने वाला है, you can see that. That is where you work to earn that sixth sense. There is a mantra. Okay? There is a mantra. If you keep chanting that mantra will invoke that power within you, that even without closing your eyes, you can see what is going to happen in the future. Right? And once you activate that, वो एक चीज से हो सकता है, if you open up your third eye, means अगर आपका अगर तीसरा नेत्र जो है वो अगर खुल जाता है, it gets activated, the third eye gets activated, you can see the same thing. Even without that, if you are chanting that mantra, you will come to know all the things that is happening around you. And the deeper you go, you know the secrets of the nature, how it works. Then the deeper you go, you will know the secrets, how the entire creation is running. The deeper you go, you forget all these things, you become one with the ultimate. उसका भी एक ही मंत्र है. So what is happening when you are diving deep into that? You are no more connected with a single mind. You are connected with the universal mind. When you are connected with the universal mind, what you are seeing is what the universe is coming up next. So you can know what is unfolding next. That's why at times there is a saying, Sumaji, your dreams are the unfolding of your upcoming future. बट ये सबके लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि कई बार तो आपने सपने में देखा होगा कि लॉटरी जीत गए, आया कुछ नहीं घर में. Right? So what is happening is that is again a brain activity. जब then you are transcending, there are see mind, which is a single entity. When it transcends that, it connects with the universal mind, which is anyways connected, but we are not able to access that. But in that state, when we are discarding the body movements and we are discarding the mental activities, we are able to connect more frequently, more easily with the universal mind. There you see what is unfolding next. And when you transcend beyond that, you can see all the three states, what you call as the past, present and future. ये कब स्थिति आती है? जो तुर्यातीत हो जाते हैं. Means it is beyond everything now. It is standing at such level where everything can be seen. Acha, this is the strand of past, this is the strand of present, this is the strand of future. And all the things, the past and the future, are just the reflection of the present moment. And looking at that, how that creation is done, you will be able to understand that. And if possible, see the movie Interstellar. I believe you'll get a great idea about how these things are done. Yeah, I did. I have seen it. Right? Yeah. So how you are able to see that? One way, unknowingly you are blessed. But that blessing is also a curse at times. Yes. Because if you see good things, you can tell people you are very good. But if you start seeing only death, you start seeing only accident, you start seeing that this is happening to people and you start telling them, nobody will allow you to get into their house itself, right? We cannot sleep peacefully. बोलेंगे ये सबसे बड़ा मनुष्य यही है, इसके बोलने से ही हो रहा है. Yeah. So many a times, even knowing everything, we have to keep our mouth shut. Or else what we'll do is absolutely apology. Dangerous मतलब टैग लगा देंगे आपके माथे के ऊपर, एक टैग लग जाएगा. You are the most dangerous person in this world. So Subhaji, that these are really possible things, लेकिन हम उसको accidentally करते हैं. लेकिन अब जब अष्टांग योग जाके करो, all the विधि जो विधिवत जो बताई गई है उसके अंदर, नियम प्राणायाम नियम, ये सारे चीजें जैसे जैसे विधिवत बताई गई है ना, उसमें लास्ट स्टेट क्या आता है? उसमें समाधि आता है लास्ट में जाके. और जब आप समाधि स्थिति में जाते हो, ये सारे चीजें वेरी कॉमन, दीज आर वेरी वेरी कॉमन थिंग फॉर यू.
it's heightening you to a height where you can see everything that is happening. It's just like you're standing on a ground floor, you see something, you go to the 7th floor, you see more. Yes. Okay. So is wajah se, when your mind is not active, you are not seeing a dream, you are actually seeing what is unfolding. And the most important thing, at times you are part of the creation of that thing to happen. It is more dangerous. More dangerous, na? Then who are you? See, we call it as a dangerous thing because we are attached to some things. But if you are not attached to anything out there, nothing is dangerous, everything. Now, can you see, like when winter comes, all the leaves fall down from the tree? Yes. Would you call it a dangerous state? No. If the leaves don't fall, will the new leaves come? No. So what looks as a dangerous thing because you are attached is a process of the nature. नहीं तो आप बोलोगे कितना बेकार है, like look at the winter, it came and all the leaves are gone. No, you cannot say that, because after that it is actually, जैसे शनिदेव को कहते हैं बहुत डेंजरस है, अरे डेंजरस नहीं है, नवग्रहों में सिर्फ 2 ही गुरु हैं, एक बृहस्पति है, दूसरा शनि है। बृहस्पति आराम से सिखाता है, ही इज ए वेरी गुड टीचर, इजी गोइंग। शनि स्ट्रिक्ट टीचर है, समझे, इसीलिए शनि को डर जाते हैं लोग। बट द थिंग इज, बृहस्पति टीचेस यू हाउ टू एक्सपैंड, शनि टीचेस यू हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स देख ले ये कर्म कर रहा है, यही फंस रहा है, निकल फ्रॉम, यू गेट आउट फ्रॉम दिस। But as we humans do, na Sumaji, like taking up the money is easy, giving back very difficult. Okay, so that's how you don't have to have a reference point from the day to see it. You only see a dream, but beyond that, when you see those things, you are either connected with the universal mind or you are connected with the creative mind, through which either you are seeing what is going to happen or you are creating that. Okay, next. Yeah, so actually another question is, say like I heard it somewhere, like they were saying like there's someone went to some astrologer and then he asked, do you have a guru in your life? And then that person replied, yes, I do. Then the astrologer said, we don't read stars for those who have guru. Okay, and then I think I don't remember who, like Sadhguru or someone was saying this one. So because the thing with gurus is like the people who have a guru, their life is entirely different, because they say like it is written by guru, like okay, or like whatever he wishes that changes all those things. So and then when I pinged, you said like it is like game over kind of thing. So but my question here is like, agar guru milte hi, we won't come to that point where we understand what is game over and we are not that. So till that time, what will happen? So see, whatever Brahma has written, that is overwritten, because now Guru is there in our life. So it is like a blank paper or something like that. Okay. And then till we reach to that point in the sadhana, like where we realize that the game is over. So there will be definitely some gap. Yes, there are. So in that gap, what will happen? Like how the life will go? Okay. It's a good one. So coming to this, it is not only by the introduction of a guru or you finding your guru, all these things happen. The moment you start walking in the path of spirituality, everything changes for you. Because as you rightly said, there is that person might be the good one. Like when he said, like, if you are going and showing your horoscope and he is asking, do you have a guru? And you say, yes. Then he said, I cannot tell anything about your future, because it will change anyways. It is no more related to your horoscope anymore. I just don't say that. I simply say, if you are on the path of spirituality, that itself is enough. Guru is what? He's a guidance. What is he guiding? He says, like, I can see what is happening to you. If you go this way, you will fall into the pit, because he has already walked that path. Guru क्या होता है? वो आपसे पहले चला हुआ है, उतना ही है.
He has already walked that path, and now as you are going through that, he will say, okay, you guide, you don't go this way, you might fall. They go this way, this is a good path. So what happens? All the pitfalls of life, he guides you through. Whenever you are going to a higher level, altitude, you take a guide with yourself. What is a guru? Guru is also the same thing. He is taking you to another altitude. You are trying to go into altitude where you don't know what these things are coming. He knows that. That is the thing that of a guru is. Now, there are surely some things जो गुरु तत्व के बारे में हम बात करते हैं. मैं खाली गुरु का बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुरु तत्व के बारे में बात करता हूं. सो गुरु तत्व के बारे में जब बात करते हो, देयर आर प्रोसेसेस थ्रू विच जब शक्तिपात होता है, उस समय में क्षण भर में सब कुछ बदल सकता है आपके लिए. इट माइट चेंज एवरीथिंग इन द मोमेंट, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज देयर ऑन यू. फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू. एक समय की बात है. देयर वाज one student, okay, and he found the guru and he did the seva of him. Purani baat hai. And when he did the sadhana and seva, suddenly the guru fell ill one day. And he has been with him for the past 2-3 years and he has never seen him sick. And then he said, what happened? Like, how can you fall sick? You are perfectly fine and all these things. He did not say anything to him on that day. But that very night, that student got liberated. And then he came to the guru. And when the student gets liberated, you know what happens next? The guru does not allow him to sit down. He asks him to sit by his side. Because what is the difference between him and me now? And then he realized, oh, so I now know why you fell ill. Then the who used to be the guru, he laughed and said, what is that? Now, I had that one karma because of which I would have gotten stuck. You have taken it over yourself. आपने शक्तिपात किया. आपने शक्तिपात में खाली देते नहीं है, कुछ ले भी लेते हैं. So you have taken it on yourself. Now you have gone through that pain. And because of your sadhana, it does not impact you anyways. But for me, you opened the door. So in those cases, Sumaji, there are, if you, इसीलिए कहते हैं ना, rarest of the rarest thing that can happen to you is either you find a guru, because the day you find your guru, you find your God. Because guru वही है जो रास्ता भगवान तक दिखा सके, the one who can show you the path to till the God. And then who can that be? He can be that. So that's how it is, Sumaji. But yes, when you see all the processes that we are doing, all the chantings that we are doing, what is the reason for doing all these things? Because there is something that should happen in your life in a certain way. We are changing that. Just like this, you cook food, right? If you add one more ingredient to the food that you are cooking every single day, if you add one more extra ingredient into that, will it change the taste? Obviously. So what are we doing through these mantras and chantings? We are adding something into that life. It is changing the taste, means it is changing the frequency, the pathway of your life. And when it is changing, what would happen? Absolutely, that's what you will experience in your life. And yes, we do so many remedies, right? गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी के सामने एक एक्स्ट्रा एक चीज लगा देते हो, like a guard. Why do you put a guard there? So that even if there is an accident, it won't hit it. But when the driver is like, when the vehicle is out, they are prone to accidents, right? Yes. So in order to safeguard, what do? You do that. So there are certain things that we do as a safeguarding thing. There are certain things that we do as a decorative thing. There are certain things that we do as transcendental things. So yes, the day
you find someone who is capable enough to make you realize or make you reach का भी बात नहीं करता हूं मैं. I'll just say who can make you realize that you are that. That day everything changes for you. Nothing remains the same. You are the same person. Are you still crying? You are the same person. Are you still the same way angry that you used to be? No. You are the same person. Are you just like going into frenzy in the same situations, or you are able to handle it much better right now? Despite all the typical things going on in your life, you are still sitting at least with a hope that things are going to change. And at least you are saying, ye hai na, dekh lega. He is there, he will take care. What gives you that confidence? Tell me now. Is it just a thought that you have in your head? No, it is not a thought. It has been in your experience. You have experienced in a minutest way or in a bigger fashion. But that itself shows you, like, your experience of that thing is giving you the faith. It is building the muscle of your faith. And that's how you go on in your life. And slowly, slowly when things unfold. Because Subhaji, literally, I have been talking about this worldly things. But again, I am clear on my things. मैं आपको वो देता हूं जो आप चाहते हो, ताकि आप वो चाहो जो मैं देना चाहता हूं. But I am still waiting for that. कि आज पेट खराब है, कल दाल जल गई, परसों हेडेक हुआ, ये मैं भी देखना चाहता हूं ये कितना दिन चलेगा. How long this will go on? Because one day, you will come to a point where you say, is it all that I am talking to him for? Is this all that I want to learn from him? Is this all that? That day we will talk. And that day you will see. Have you chosen a right person, or he is just another one good at telling stories? That day you see that. मैं भी सामने बैठूंगा, मैं भी कहीं जाने वाला नहीं हूँ. And if you are true, I will run away anyways. If I am not true. And if both are true, both will stay. Okay. So next, couple of questions means 2? No, I still have. But I don't know, like sometimes it feels like just don't ask, just sit and. No, in your asking, so many things come out, right? Okay, I'll ask one more and then stop. Okay. Okay, in one of the sessions, you said if you decide to give best experience to divinity. Now you see, she has heard all my sessions. She has created questions out of them. And now she's asking me again. ठीक है, क्या बोला हूँ हमने, बता दो. Like, what have I said? Sorry. Yeah, I don't know if I can ask or not also, but. No. What is the question? In one of the sessions, you said if you decide to give best experience to divinity, then and give the best to him, then it will give best to you. Okay, if you give the best to the divinity, then it will give best to you. So if we say like we surrender to you and then we have given everything to you, now the control is in your hands, like we don't have anything because we have surrendered to you. That means everything is given to you. Then in that case, what I have to give a best experience to the divinity, because already I have given everything to it. Very good. Best experience, जो बताया जा रहा है उसको सही ढंग से कर लो. Whatever is being taught, you do it completely. That's the best experience that you can give me. Now you just see, like you are a teacher and you go to the school and you are teaching the kids. When will you experience that the student has done the best? Whatever I have taught, he has done it. उतना ही है ना? So when you now, yeah, but we have an idea in our head. क्या कहते, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा. यहाँ फंस गए जाके. बोला तन से क्या सेवा करूं तुम्हारी, मन से क्या करूं, पूजा करूं तुम्हारी, धन से क्या करूं, तुम्हारे ऊपर लेके डाल दो. यहीं पे फंस गए लोग. This is where people bake their cake. If you go to them, they will say,
हाँ गुरु है ना, हाँ गुरु के सामने तन मन धन सब दे दो। अरे पूरा सब कुछ दे देगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा भाई। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, इस चीजों के पीछे का रहस्य कुछ होता है। तन मतलब नॉट दिस फिजिकल बॉडी एनीवेज, मन धन। आप एक बात बताओ, ये तन तो कैसे भी रहेगा नहीं, तो आपका है नहीं तो आप दे नहीं सकते। मन क्या है, मन स्थिर है क्या? नाउ अंडरस्टैंड दिस। तन, तन का क्या मतलब है? द बॉडी दैट यू हैव, इट शुड बी सो वेल बिल्ट इन ए वे, मीन्स योग जब सिखाया जाए तो योग कर सको, द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, ये हो गया तन। मन, स्टिलनेस ऑफ द माइंड, सो दैट जो सिखाया जाए उसको एकाग्रता के साथ आप कर सको, ये हो गया मन। धन मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ धन क्या है आपका? ये जितने सारे चीजें आप देखते हो आपके आपके नहीं होने से कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट यू हैव इज योर breath, your life. Means I devote this life in your hands and now you change it into divinity. I am fit to do whatever you say, physicality, tan. I am going to listen without unwavering, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। क्वेश्चंस अलग चीजें होते हैं, तर्क अलग चीज होती है। आप जो पूछ रहे सवाल है, पूछने चाहिए। तो मेरा मन क्या है, मैं जब आपके सामने बैठूं, my body is not moving, it is not thinking about anything else. When I'm sitting in front of you, my mind is absolutely still, I'm not thinking about anything else. Dhan, the life force that is going through me is absolutely right now unwavering, sitting in front of you. ये मेरे लिए मुझे लगता है कि ये तन मन धन होता है। वो शोषण का बात नहीं कर रहा हूं मैं, लोग उसी शब्द को लेके शोषण कर देते लोगों का, शोषण का बात ही नहीं कर रहा हूं। So what is tan man dhan now? When you are sitting, that's why I said no, लोग जाते मंदिर में, they go to the temple but they don't meet God, because वहां पे वो तन मन धन लगा के नहीं बैठे। उनको लगा तन मतलब मैं चल के आ गया वहां पे, I went there into the temple, तन आ गया। मन, मैं मन से जोर जोर से प्रार्थना कर रहा हूं, मन लग गया। धन, हाँ हुंडी में पैसा डाला। नहीं, तन मन धन का मतलब वो नहीं है। My physicality, my mentality, my life, when it is coming in front of you, it is neither thinking about anything, neither it is going anywhere. It is absolutely still right now in front of you, not as two, as one with you. तो क्या है तन मन धन? समझ में आया? So how you should be? Unwavering. सामने बैठ जाओ तो बैठ जाओ। इसीलिए हम कहते हैं ना सुमा जी, लाइक मिलते तो बहुत लोग हैं, बैठते बहुत कम है। You come, you don't sit. You come with your problems, you come with your ideas, you come with your suggestions. And then we start. Right, Rajan ji? Yeah, Suma ji. Couple of questions means 3. I will stop from today. For today, I will stop. Okay. So I believe like I gave you a long-standing answer for everyone actually. क्योंकि नहीं तो हमने सुना है लाइक ये तन मन धन के नाम पे बहुत कुछ कर लिए लोग। Have been too many things happening. So thank you for your triplet questions. मतलब ऐसा लगा कि त्रिशूल बना के लाए थे आप। Yeah, thank you so much. Dhaval ji, please unmute yourself. प्रणाम धवल जी। कहाँ गए धवल जी? एक क्वेश्चन ये है कि आपने एक बार बताया था कि जो भी लोग स्पिरिचुअल मार्ग में चलते हैं उनके लिए जो हमने अभी प्रोसेस किया होलिका का,
Okay. So these kind of things is required, और मतलब जो ये मार्ग पे चलते हैं उनके energies पे या कुछ you were trying to say which I could not able to understand properly. What exactly happens, why we need to protect ourselves, and whether generally it has to be positive outcome instead of that what generally happens or we attract is what I one question. And second chota sa ek और Okay. So the first question, can you just sum it up in one sentence? In spirituality, if somebody is walking on that path, what kind of danger we face? Oh. The danger you face. Positive terms. In positive terms. Okay. The danger you face is story over, game over. That's the most dangerous thing that will happen. Because what you are trying to find is you are finding liberation, means there is no more coming back, going, doing this or doing that. Then the problem that happens is throughout the life, if I have accumulated all these things, what will happen to that? That's the more dangerous thing. Second thing, people are worried, people are agitated, you are laughing. That's the most dangerous thing again. Now, some people do like this also. Now, I saw someone doing that. Hamare wahan pe, like in my place from where I come from, they say if you want to create fight between two people, and if they're not fighting, standing in front of them, just do like this, they will start fighting. लेकिन और कहीं पे बताया गया ऐसा करने से बाल उगते हैं. So Dhavalji, dangerous things about spirituality. It will not allow you to go to depression. Dangerous thing. You will be so optimistic when there is nothing. In absolute darkness, you will say, "Arey, there is light." More troublesome thing. Everybody is so worried, kya hoga, kya hoga, kya hoga. You are sitting with a cup of coffee and sipping. And then you say, "Papam." He knows that also. These are, you cannot say like the dangers of it. You can say the side effects of spirituality. कुछ मुझे एनर्जी की बात हो रही थी कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं तो ये एनर्जीज एब्सोल्युटली देखो, if you see, if you are going on a path, you meet so many things in your path, right? बहुत सारी चीजें आपके सामने आती हैं, right? So let's say you are going on a very good street, the road is very good, you are just running on that, full throttle. And then suddenly from nowhere, a stone comes and your bike skids. So what is that stone doing there on that street? Does that stone even has an intention to make you fall? No, it is just there. But what I am doing in my speed, I am not able to see what is happening. I just skid on that. So you see, in spirituality also, there are certain things that you will be coming across in your life. You can call it as a hurdle in one way. Hurdle in the sense, because whenever there is a positive energy, the opposite of it will also be there, because we are dealing with duality. So what you have to do is safeguard yourself and keep walking. Safeguard yourself, keep walking. Safeguard yourself, keep walking. तो ऐसे चलते चलते ऐसी ऊर्जाओं के साथ आपका पड़ेगा. You will come into certain spaces. But the only thing is, like energy flows from higher to lower side. If you are doing all these things in the right way, तो ये जो छोटे-छोटे चीजें हैं ना, it won't affect you. But we have also seen some people, those who have gone crazy by doing certain things,
कुंडलिनी जागरण ही देख लो ना, वो कुंडलिनी जागृत करते करते पागल हो गए हैं। Have you seen that or not? There is an absolute disbalance in those people. Asylum में चले गए हैं। Why? Because the guidance was not right. Or they tried doing something that is not in their realm. वो जानते भी नहीं है जिस चीज के बारे में, उसके प्रति भाग गए। So while we are going through all these things, why we are giving you all these processes again and again and again and again? क्यों चाहिए आपको एक सुरक्षा कवच लेके? क्यों चलना चाहिए आपको? आपको मंत्र जाप क्यों करने चाहिए? क्यों हवन कराता हूं मैं आपके घर में? ऑल दिस थिंग्स। अभी जो होलिका का जो प्रोसेस हुआ, गुड़ का जो प्रोसेस हुआ, व्हाई? कि बिकॉज आई हैव टू गिव यू ऑल द थिंग्स दैट कैन सेफगार्ड यू एंड प्रोपेल यू अहेड। जैसे हम कहते हैं ना, अगर पेट में दाना नहीं है तो बैठ के पूजा भी नहीं होता है। फिर क्या होगा? गणेश के जो लड्डू रखे हो उसके ऊपर नजर आपकी जाती है। गणेश खाए ना खाए, आप तो उसको खा ही चुके हो। So we want to deal with this in this way, Dhaval. There are frequencies that are not good, there are frequencies that are good. So we have to safeguard ourselves from falling down and continuously keep walking above. उस सारे चीजों के लिए रुकावटें तो होंगी, लेकिन रुकावटें के लिए समस्याओं के साथ में देखो, राम को अगर रावण नहीं होता तो कौन पहचानता? आपके जीवन में अगर कठिनाई आए तो आपकी कहानी क्या होगी? So if that is going through, but you don't forget yourself who you are, that spiritually does to you. Despite all the problems that you are going through, you still keep on walking. Because you have chosen to close the game. So that takes effort. तो खेलने में तो सबको मजा आएगा, अरे और एक बार खेल लेते, और एक बार खेल लेते। But nowadays that has also moved into another dimension, धवल जी। खेल तो कोई खेल नहीं रहा। नेटफ्लिक्स बंद करने में कितना मुश्किल होता है बताओ? मतलब घंटों बीत जाते हैं, पता भी नहीं चलता। बंद करने के समय और जस्ट 1 मिनट देख लेता हूं, उसके बाद माउस क्लिक कर दूंगा। होता है। So these are the things. जीवन में बहुत कुछ और भी करने को है। I, Prabhu, don't watch even the TV. Forget about amazing. Netflix. That's why you are amazing. Since many years. दूसरा एक quick one is that पूजा के लिए धनाकर्षण भैरव यंत्र के ऊपर रखने के लिए, deity के लिए, जब मैं when I go to pluck flowers in the morning, sometimes from the garden or from the terrace, I see few of the insects inside and around. So I feel hurt that I have made them die by my pleasure or for putting it on the deity. So ये what अर्जुन, to do on that? ये अर्जुन का विषाद है। यही अर्जुन का विषाद है। Nothing else. This is what the sorrow of Arjuna is. He thinks like he has broken, and because of him something died. I was listening one of the Q&A session where you said that Arjun's विषाद किसी के मुक्ति का मार्ग है, बन गया है कई सारे लोगों के लिए मुक्ति का मार्ग। तो आप भी वही कर रहे हो आज ना। So you see, when you can see that there is a small insect in that. You can put it to another flower if you really want to. I do it, but sometimes, like, I'm unaware that if it is there in or not. So then pray for it. Can't you pray for that? You can pray for it. कि इसकी मुक्ति हो जाए, और क्या बोलोगे? कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, हाथ जोड़ लेना प्रभु, बोला प्रभु इसकी सद्गति हो जाए। और जो मोक्ष प्रदायक है उसका क्या होगा बताओ? If you are the one who is always thinking about liberation, if you are the one always जिसके हाथ से कुछ भी हो जाए वो बोले कि भाई मोक्ष हो जाए इसका, and what will happen to you? Got it? तो कहते हैं ना, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। हाँ,
तो उसको दे दो, भाई देख, मृत्यु का देवता तू, संहार करता देवता तू, मुझे नहीं पता मेरे हाथ को क्यों चुना तू आज, इसकी मुक्ति हो जाए। Every act of yours should be an act of liberation, not bondage. If you think like मेरे तोड़ने से उसको तकलीफ हुई, मेरे तोड़ने से वो गया, if you really want to do that, कहीं पे भी पुष्प तोड़ने से पहले हाथ जोड़ लो, उसको बोलो, हे वृक्ष देवता, हे गॉड, the god that is residing in this tree, I take your permission, please grant me the permission to pluck this flower from you, and I am taking this for a higher purpose. Tomorrow it will just fall down onto the soil again, but today if I pluck it out, it will go to the feet of the divine. Please allow me to do that. Can't we say this prayer? Kitna samay Yes, I do it often. That is good. The karta kare, don't become the doer there. Now, the thing that I am plucking and the hand that is plucking, it's all his. You are just the witness there. लेकिन आप सोचो धवल जी, एक छोटा सा बच्चा है, small little kid, if he goes and plucks a flower, will he think all that you are thinking? नहीं ना? No. एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा, like it will make your day, everyone's day actually. किसी ने पूछा कि बच्चे, the kids, why do they look so innocent? बच्चे इतने इनोसेंट क्यों लगते हैं और बड़े इतने टेंशन में क्यों लगते हैं? उसने कहा क्योंकि बच्चे खेलते हैं, बड़े साजिश करते हैं। बच्चे मासूम इसीलिए लगते हैं, the kids look innocent because they just play, but the ones those who have grown up, they plot, they don't play, that's why they look like that. And the day you change your life to a play rather than a plot, you will see, you will also just look like that only. Your innocence will be back. So when you are plucking that flower, become innocent, not plot. Okay? Sure. Good thing to speak Yes. in your seminars. Sure. Yes. Do use that. Thank you, Prabhu. Thank you, Dhaval Thank ji. you, Dhaval ji. Janesh ji, please unmute yourself. जनस जी, और हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का समय है, नहीं तो कुछ लोगों के आंखें बंद हो जाएंगी 10:30 होते ही। एग्जैक्टली। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। जो भी आपने अलीवा जी को साथ बात किया, जो भी आपने सुमा जी से बात किया, जो भी उन्होंने पूछा, जो भी आपने समझाया, ये सब का एक ही तात्पर्य है कि आप हमारे गुरु हो और हमें पार लगाना आपकी जवाबदारी है। अभी आप ये मत कहना कि तुम तैयार हो जाओ तब मैं करूंगा, हम तैयार नहीं है इसीलिए आप हमारे गुरु। मतलब how bad students I have chosen, that means, huh? Yes, absolutely nuisance. Means now that is also blame on me that Yes. सही लोगों को नहीं चुना। Yes. Now I'll tell you one thing about that, Janesh ji. क्या कहते हैं, when the student is ready, the guru appears, right? मैं एक चीज बताना चाहता हूँ उसके बारे में। That means the guru was already always there. Yes. The day the student opened his eyes, the guru appeared. Yes. तो इसमें महत्व गुरु का है या शिष्य का है, बताओ? नहीं, गुरु का ही है। कैसे? क्योंकि उसने उसकी आंख खोलने को लगाई, नहीं तो उसको तो गधे को भी मालूम नहीं कि आंख खुलनी चाहिए। नहीं जनेश जी, आप नहीं जानते, some people say that if you are the guru, you opening the eyes is also your work. मैं कुछ नहीं जानता गुरुजी, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपको जो प्रोसेस करवाने में करवाओ, आप विघ्नाभरण करवाना है करवाओ, आपको ये करवाना है करवाओ, वो करवाना है करवाओ, लेकिन पार करवाओ बस। पार लगाने के लिए कुछ करने की और जरूरत ही नहीं है। बस तो मत करवाओ, लेकिन आप इस तरह से गुरु के तर्क वितर्क से हमें शिष्य को कंफ्यूज मत करो, क्योंकि वहां हमारा दिमाग नहीं चलेगा। और गुरुजी, इतने सारे
उपनिषद लिखे गए, इतने सारे शास्त्र लिखे, कई अलग अलग ऋषि मुनियों ने लिखे। अगर अगर सही में एक आदमी के पास इतना पावर रहता कि यूनिवर्स से सब खुद के मगज में डालेगा, तो एक ही ऋषि ने सब लिख लिया रहता, दूसरे ऋषि की इसी की जरूरत नहीं थी। तो हमें वो पचड़े में नहीं पड़ना है, ना मेरे को कोई शास्त्र लिखना है, ना मेरे को कोई उपनिषद लिखना है। So Janesh ji is writing a treaty to with me today, and I Yes. don't have anything. I am signing it off. Yes. ना मेरे को पढ़ना है, ना मेरे को पढ़ाना है। Good. Thank you. ना पढ़ना है, ना पढ़ाना है, ना सीखना है, सिखाना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपने जो सोचा है वहां पे पहुंचाना है, बस। मेरे को भी नहीं मालूम कि मेरे को कहाँ जाना है, आपने जो सोचा है वहां पहुंचना है, बस। और कुछ नहीं चाहिए, बस 5 मिनट के अंदर खत्म कर दिया, इससे भी ज्यादा नहीं वक्त चाहिए। नहीं, आपने मुझे वो गुरु मूवी का डायलॉग याद आया। बिजनेसमैन हूँ, तुमने मुझे 5 मिनट का समय दिया था, मैंने 3 मिनट में खत्म कर दिया, 2 मिनट बच गए तुम्हारे। हाँ, बस। So thank you. प्रणाम गुरुदेव। देखो ये 2 मिनट आए अभी सुधा जी। क्या सुधा जी प्लीज अनम्यूट। सुधा जी प्लीज। गुरुदेव उनके जो 2 मिनट बच गए वो मैं ले लेती हूँ। चलिए ले लीजिए। टोटली जो उन्होंने कहा मैं वो उसको कॉपी करके आपके सामने पेश कर रही हूँ, जो दिनेश जी ने कहा है। थैंक यू। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है गुरुदेव, बस। फिर हरि भाई को बोलो एक गूगल फॉर्म ही बना दे। 2 मिनट मेरे हो गए। थैंक यू। थैंक यू। अरे बाप रे। या गौरी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या गौरी जी। Pranam Mahadev. Now I feel like we are in the football game where the decision could not be made and extra time has been given now. Sorry, Mahadev. Like, actually, I was actually a little bit, I dozed off, like I was waiting. I really want to thank you for everything. That's why I really want to come today. I came, I was able to do that. Last 2 days, like, I used to tell you, right, whenever though I really want to do certain processes, most of the time I'm doing everything in Manasik way. But I could do that. So I was yesterday, was asking Mahamay, whether I'm doing the right thing or not. Just show me some sign whether you are there or not, because so much of playing is going around. Times I'm not able to put it, whether it is I'm going through the right way or not. But I think, yes, today, being, and happy Women's Day to everyone, each and everyone, and to the beautiful ladies, beautiful souls, as well as for all the men over there. Happy Men Day from my side. Yes, that's it. So I'm wishing everyone, all the cuties and all the good guys, looking good. So today, I was able to go to my biological parents to serve them. So they wanted me there. So I was able to go there. So still I was asking, Lakshmi is too busy being a Mother's Day. She used to take care of me, get something other than I thought. So I shouldn't be expecting anything, right? So I should be a giver, more of giving and all. Then I was suddenly I got a call from one of my cousins. She's carrying that girl. She said, "Mommy, I really need you now. Are you free to come over here?" So it's like she took me, she wanted to go somewhere, and then she took to the parlor. She said, "It is my gift. You have to go through something and all." And really, I got some good massage. Like I was having a pain after having a fall. It's like, even though I was thinking of getting something, but Mahamai know what is in need for me for today's, and she just gave me that. So I think times we don't have to wish anything, because when she is taking care of everything, I think what is the use of feeling bad or
Though even at times we feel like crying or being lonely or something, whatever it is, as you said, no, it's just the body, no, it will let you just let it cry. So I just want to, so really, and on the way today, while I was going through the bike also, like, so two ladies, they were passing through me. So I just shouted and called them, like, Happy Women's Day. I called them. We were waiting near the signal. So they were like, wow, oh yeah, Happy Women's Day. Like, so when you feel something, we have to wish somebody. I felt that was the happiest moment for today. Like when they also were looking good and all. So I really want to say thank you for today. That wish also was, so I was waiting. So I want to, like, I was waiting. So whether if I can say come next week is almost time, and but then I thought no, today being a women's day and everything, I really have to thank you. So last second, 1 second, I take that 1 second from you. Thank you. Thank you so much, Mahadev. Thank you, Mahadev. And because you are there, I know at times even I feel I don't want to disturb you also, but when I think of you, like I said, Guruji, I really need some answer. Then something will inside me, you know the answer, then why you are troubling Gurudev? So something is propping up from inside me. So Mahamaya is there. Thank you for everything, Guruji. Thank you. Thank you so much. Thank you, Guruji. So with this, thank you each and everyone for being here, for sharing your thoughts, for sharing your questions, for everything. And today we were able to again dive into different things altogether. So thank you all. And till we meet on Sunday again, just stay blessed. And remember your true self, obviously, without forgetting that part. So with this, I would like to give a break to my words right now. Till we meet again, Aham Brahma.